Okay, जी अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. This is industrial automation. Last time जहाँ पे मैंने छोड़ा था, I'm gonna start at the same point. We were at analog signal conditioning. This is chapter 2 and हम इसके subsection 3 तक पहुँच गए थे. So I'm starting at the same point, that is passive circuits. Okay, analog signal conditioning. As we know, signal conditioning is something, it's a black box in which we give an input and that input is converted into the output, and that output is interfaceable with our requirements. ये एक certain voltage है, एक certain signal है, ठीक है. This is C of t and you get something that is B of t, and this B of t is interfaceable with your subsystem. This is analog signal conditioning. It should be in the same domain. Analog के domain के अंदर रहते हुए हम जो भी signal conditioning apply करेंगे, that will be part of the analog signal conditioning side. We started with the passive circuits. उसी को मैं थोड़ा सा continue करूँगा. One of the most basic passive circuits जो हमने देखे थे, that was a voltage divider. एक voltage divider हमने लेना है and we're gonna see कि how we can use this voltage divider to condition a signal and use it into a way कि उसको हम अपने system के साथ interfaceable बना सकें. Let's see if we have a sinusoid signal that has a bias value of 5 volts. I'm not interested in the frequency at this point, and it has a swing of around 2 volts. That means 7 and lower side is what? 3. मैंने इसको connect करना है to a system which only takes 0 to 5, which means कि मैंने इस input signal के साथ को एक ऐसे circuit में से गुजारना है जो कि somehow इसको 0 से 5 के अंदर convert कर सके. So अगर इस question mark box को मैं अभी से fill in करने की कोशिश करूँ तो all I can see, I have to change the bias voltage. That is, मैंने इसका lower point जो है वो 0 पे लेके आना है और इसका upmost point जो है वो मैंने 5 पे लेके जाना. तो पहले नंबर पे तो this has to subtract -3 and then some kind of a attenuating factor or some kind of a gain factor, इसको मैंने यूज़ करते हुए इधर लेके आना. Now अब मैं voltage divider किधर put in कर सकता हूँ? I can only use voltage divider as an attenuator. So let me take another signal. मैं यहाँ पे लेता हूँ. I have a signal that is at 0 to 12 volts. It has a voltage swing of around 12 volts. It is between 0 and 12 volts, and I want this thing to be in 0 to, let's say, 3.3 volts. It has to be interfaceable with a high speed ADC. एक high speed ADC है मेरे पास, मैंने इसको इसके साथ interface करना, which means कि मैंने इसको 0 से 3.3 volts के अंदर लेके आना. All I have to do is use a simple voltage divider and get my desired value in. कैसे? Let's see. This point is supposed to be my V in and this point is supposed to be V out. This is R1 and this is R2. We all know V out has the expression that is V in into R2 over R1 plus R2. Right? Okay, the standard practice is we know V in is known
V out is known. So what remains is R1 and R2. ये दोनों के दोनों question mark है. Just suppose any one of them. Let's suppose R1. ठीक है जी. R1 मैंने सपोज कर लिया. सपोज करने के रूल्स क्या हैं? रूल्स ये हैं कि वट एवर इज़ द रजिस्टर दैट यू आर यूजिंग, वट एवर इज़ द पावर रेटिंग, लेट्स से क्वार्टर वाट, ठीक है, you have to ensure that power dissipation PD does not exceed PD does not exceed 1/4 of the watts. A quarter watt की rating को exceed ना करे. Secondly, another consideration that should go into, and that is more important, is because R2 is what, ठीक है, normally what you want is कि जो पावर ड्रेन है, पी ड्रेन, ये भी कम से कम हो. It should approach to, it should approach to zero. This is our requirement. जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेहतर है. So just suppose any one of and the thumb rule is, if you are operating between, let's say, 512, you suppose somewhere around 10k to 50k to limit the power drain. If you are over that value, let's say 28 volts, you go for 100k to 1 mega. So this is how you choose it, right? So as far as voltage divider is concerned, that is pretty much the rule. Okay, let's move to part 2. That is इसी का सबसेक्शन है, section 3 का, that is section 3.2, that is bridge circuits. We can use these bridge circuits to our advantage in such a way कि मैं इससे सिग्नल कंडीशनिंग भी कर सकता हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू बी योर V of S. अभी आगे बताता हूँ कि मतलब व्हाट्स द डिफरेंस हियर. R1, I call it R2, I call it R3, and then R4. This is nothing but दो वोल्टेज डिवाइडर कनेक्ट हुए हैं एंड VAB इज़ द पॉइंट जिसके ऊपर हम नॉर्मली डिफरेंशियल वोल्टेज, हम डेल्टा भी बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल वोल्टेज मेजर करते हैं. The interesting point of a Wheatstone bridge is that it has a very significant change in delta V if any of the resistances change. Supply voltage change की बात नहीं कर रहा. If any of the resistance change in the bridge, the output equation has a very sharp change. And what it means is कि a slight change in resistance can have a large change in output voltage, and that is desirable. यही मैं चाहता हूँ कि मेरे पास छोटा सा भी चेंज आए अगर रेजिस्टेंस के अंदर, तो मैं आउटपुट के ऊपर एक बड़ा चेंज ऑब्जर्व कर सकूँ. और why are these circuits important? Let's take the application wise example देते हैं. इसकी सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो मैंने देखी है, दैट इज़ इन द केस ऑफ लोड सेल्स. लोड सेल क्या चीज़ होती है? लोड सेल इज़ अ डिवाइस, एक फिज़िकल डिवाइस है इस तरह बना हुआ. इट इज़ वेरी डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर. इस तरह का एक बना हुआ फिज़िकल मेटल का पीस होता है जिसके अंदर डिफरेंट साइड पे डिफरेंट रेजिस्टिव एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं. यू अप्लाई लोड टू इट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन. इसकी वजह से देयर इज़ अ वेरी 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 स्लाइट चेंज इन रेजिस्टेंस. इतना छोटा चेंज होता है दैट इट्स हार्ड टू मेजर with a normal DMM or something like this. What you do is
you use any of your sensors in any of the locations of the bridge. सबसे पहले मैं डेल्टा वी की इक्वेशन लिखता हूँ. डेल्टा वी इज व्हाट? That is VA minus V of B, that is R3 over R1 plus R3 into V of S minus R4 over R4 plus R2 into V of S. You get Vs of common outside and you will have a differential equation. सेंसर कहाँ पर प्लेस करना है? सेंसर आपने प्लेस करना है जी at this location. सेंसर आप लाएंगे R4 पे, ठीक है. वाई R4 किसी भी एक पॉइंट पर उठा लें, लोअर साइड है इसलिए we prefer R4. Okay, now let's see what's going to happen. इस R4 को now I'm gonna replace it with R of S. R of S means what? A sensor that changes resistance as a function of some X measurement. This X can be temperature, this X can be pressure, load cell, anything. Okay. Okay. Now I'm gonna place my sensor over here. My new bridge should look something like this. सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करूँ. R of S R2. ओके, पूरा ड्रॉ कर देता हूँ. So V of A, V of B. That's it. अच्छा, point of difference. Point of difference is कि in this case मेरे पास सप्लाई वोल्टेज जो है इट इज़ वेरी स्टडी, ठीक है. यहाँ पे दिस थिंग दिस इज स्टैंडर्ड 5 वोल्ट्स और 12 वोल्ट्स जो आपको चाहिए. बट यू आर इंटरेस्टेड इन इज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस. मैंने पहले ही कहा था एनालॉग सिग्नल कंडीशनिंग इज समथिंग दैट कैन किसी एक इनपुट को पकड़ूँ मैं और उसे अपनी इनपुट के साथ इंटरफेसेबल बना सकूँ. मेरे लिए इंटरफेसेबल चीज़ ये कि आउटपुट शुड बी इन सम डिटेक्टेबल फॉर्म. खाली चेंज इन रेजिस्टेंस को मैं सिस्टम के साथ इंटरफेस कैसे करूँ? आई हैव टू कन्वर्ट दैट चेंज इन ऑफ रेजिस्टेंस इनटू अ चेंज ऑफ वोल्टेज दैट इज़ मेजरेबल. उसके लिए आई विल बी यूजिंग दिस थिंग. सो आर एस मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया. नाउ दिस आर एस इफ इट चेंजेस रेजिस्टेंस प्लस माइनस एनी डेल्टा आर जो कि इसके अंदर आता है, व्हाट विल चेंज? इसकी वजह से दिस विल हैव अफेक्ट delta V के ऊपर there will be change, and I can use this point, this VAB point, and I feed delta V to my interfaceable system, that is अभी मैंने पहले बात की थी ADC sorry ADC. इस ADC के साथ I will interface it. So that interfacing is complete at this point. Okay, Wheatstone bridge. Is there anything that we need to know? Okay, as a practice problems, please go through example 3 and 4 and example 5. That's it. You go through these examples, and then on the next side I'm gonna start with lead compensation methods and current spanning bridge. Okay, that's it for today. Thank you.